एक सही है फर्स्ट आंसर सही है इसको अगर किया सेकंड आंसर ये प्लस मुझे ऐसा आ गया नहीं एक्चुअली सिंपल ट्रिक है टूवर्ड्स यहाँ पर ये है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कि यहाँ पर 3x a raised to x plus 3 minus 2x into 2 square ये क्या है इसको बस मल्टीप्लाई नहीं करना 3 into 2x दिखाता हूँ x plus 1 what's value to other plus 2x plus 2 log plus 1 we add by to होता सही ऐसा बस वो प्लस 1 की जगह प्लस 3 के 3x से भी होगा minus 2x into this one minus 2x square नहीं into 2 square बेस में तो पावर ऐड करेंगे पता है ना बेस में आगे रहेगा वैसा नहीं 2 को अलग कर दे मुझे नहीं आ रहा था गूगल लेंस है मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट वैल्यू भी स्टैंडर्ड 3.2x ये होगा प्लस 3 minus 2x into 2 square plus 2x common ले 2x common फिर पाई प्लस 3 क्या है ऐसा नहीं है सही है फिर 2x कॉमन लिया 2x कॉमन लिया 2x कॉमन लिया मल्टीप्लाई कट नहीं होगा 2x स्क्वायर नहीं बस 2x एक कॉमन लिया उसके अंदर एक ये रहेगा नॉर्मल ब्रैकेट उसमें रहेगा 3 माइनस 4 2 स्क्वायर 2x 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 4 से भी मल्टीप्लाई हमने अलग किया तो 3 minus 4 2x 3 minus 4 plus 3 plus 5 मैं भी पहले ऐसे कर रहा बाद में मैंने यहाँ से see मैंने 3 को देखा नहीं किया
Answer here. Yeah. Because I two raised to x. 2 into x means 2 raised to x. Another product 2 raised to x. And 0 raised to x. That's it. That's it. 2 raised to x. 2 into x into minus 1 minus 2x, which is equals to minus 1. Minus 1 is there. X minus 1. And x is into. Sorry, it is 2x equals to 2 x equals to. So now we are mark. Now, with our steps, so we make it. So, yeah. X plus 3 minus 2x square. That means we continue for equation 2. Purpose. And that's what. What have we completed last? Well done. Only nucleus left. Everything is completed, na? Yes. Nucleus and prokaryotic and eukaryotic. Ma'am, new joined what? Newly joined? First lecture? The good name? Which school? Look, na? पहली बच्ची हाँ ठीक है
Okay, madam, we are almost about to complete, sir. Okay. So you ask them when the next lecture or whatever, I think required lecture. But next time onwards for bio lectures, you will never carry your volumes. So that you can do. Okay, you carry your textbooks. So you नहीं पढ़ोगे क्या करते गोयल ना तुम लोग गोयल पढ़ोगे ठीक है गोयल का टेक्स्ट देखा है मैंने नथिंग लाइक जो ऑलमोस्ट सरीना में ऑलमोस्ट सेम ही है थोड़ा आगे पीछे कर दिया है कुछ चेंज नहीं है so I think we can straight away move to the last part of the chapter that is just a small part left out is what is nucleus. So for timing I wanted to close your textbooks and everything, just focus on to the board. Okay, now the moment I say nucleus, the nucleus is a circular structure present normally in the center of a cell. Need not be always, but normally it is present in the center of a cell. It's a double membrane structure. So it's a double membrane structure. This double membrane is not completely intact, but at certain point there is a gap. This gap are known as nuclear pores. So nuclear pores means the small channels or small holes. So this is what we refer as nuclear membrane. So what is nuclear membrane? Nuclear membrane is exactly similar to cell membrane. So bana cell membrane se hi hai, but because it is covering the nucleus, we say it as nuclear membrane. What is cell membrane chemically made up of? Good. It is made up of lipoproteins. So nuclear membrane is also made up of lipoproteins. Now, like we said, cell membrane gives a shape to a cell. It makes or it differentiates between the outer surrounding and the inner surrounding. It protects the things or cell from something going in and out of the cell. Same thing nucleus membrane bhi kar raha hai. It is the membrane which makes the nucleus. Okay, it is a double membrane structure. It is this which differentiates the outer cytoplasm and the inner nucleus part. It restricts the content of the nucleus within this membrane. Now, this membrane is not completely intact, but there are small pores known as nuclear pores. What is the function of nuclear pore? It is through this nuclear pore, the nucleus communicates with the cytoplasm. So whatever communication is done with the cytoplasm, it is done via nuclear pore. If something moves out or something moves in, so that's one. So it communicates with the cytoplasm. At the same time, certain times this nuclear pore is in connection with the endoplasmic reticulum. So it is in communication with the endoplasmic reticulum. So that's what the nuclear pore will do. It's communication, basically factor of communication. Then within this nuclear membrane is a ground matrix known as nucleoplasm. What is it equivalent to? Cytoplasm. So like the outer, if I draw this as a cell, this is the cytoplasm of a cell. This is the nucleoplasm of the nucleus. So what was the function of cytoplasm? It is a site of all the chemical reactions occurring within the cell. So what is this? It is a site of all the chemical reaction of the nucleus. Within the nucleoplasm is scattered a thread-like structure. These thread-like structures are known as, what are they referred as?
chromatin fibers. So these thread-like structures are referred as chromatin fibers. Is it clear? Now, nucleoplasm is a jelly-like structure, slightly thicker than the cytoplasm. तो cytoplasm भी jelly है, पर ये थोड़ा consistence में ये कम है, थोड़ा इससे ज़्यादा है, because that has restrict itself. Then within this nucleoplasm is the thread-like structure known as chromatin fibers. What is the main function of chromatin fibers? सुना है? स्कूल में चैप्टर हुआ नहीं? DNA और कुछ? Then it is this chromatin fibers which carries the genetic information. So the hereditary characters are carried via chromatin fibers. आप काले, पीले, नीले, गोरे, छोटे, मोटे, कैसे भी दिखते हो, वो डिसाइड कौन कर रहा है आपका? Chromatin fibers. So what exactly are chromatin fibers? So we try to understand this because अभी नहीं तो next year first chapter इसी के ऊपर पूरा based है. So you should be knowing thoroughly about it. So what is chromatin fibers? If I draw it just outside, ये chromatin fiber है, thread-like structure. But if I see it under an electron microscope, I will not say it a thread-like structure, but I will see it something like this. What can you say about this? It's a beaded chain. मतलब दिखने में ये मोतियों की माला दिखाई दे. I hope मोतियों की माला समझ में आता. So beaded chain. So what is this beaded chain basically? The beaded chain is made up of chromatin fiber. Chromatin fiber is chemically nothing but it is made up of two components. DNA plus proteins. Okay. Now we try to understand what exactly is this. The chromatin fiber is what we say as DNA plus proteins. So this ball-like structures are referred as proteins. So जो beads है, वो proteins है, and they have specific name. They generally chemically are proteins, but these proteins are referred as histones. So if anybody asks you what is chemically chromatin or what is chromatin fiber made up of, we normally say it is made up of DNA plus histone. What are histones? They are proteins. इतना समझ में आया? Okay. Now in this bead-like structure, मैंने beads को निकाल दिया. I remove all the motifs out of it. What is left? Only the thread. Okay, this thread is referred as DNA. So सिर्फ thread बचता है वो DNA और जो beads है वो histones है. दिखने में ये beads दिखाई दे रहे हैं. अगले सब पढ़ोगे. Getting not a single bead. 8 molecules of histones come together to form a structure. तो दिखने में एक दिख रहा है, actually वो 8 molecules है. Which form the structure? That is something to study in next class. So I don't want to go in. This is what a DNA and proteins are. Now, who carries the genetic material? We said chromatin fibers carries the genetic information. So who carries the genetic information? The DNA. So what is the function of proteins or what we say as chemically histones? Histones are primarily supportive molecule. इनका main function है support करना. Why supportive? What is the size of a cell? Micrometer. Can you see with your naked eyes? No. So what is the size of a nucleus? उससे बड़ा या उससे छोटा? और मुझे cell के अंदर तो उससे छोटा ही होगा. So what is the size of the threads within it? Very small. Okay. Then chromatin fiber. If I take my example or anybody of your example, हमारे WCG में होते हैं.
So if I take that, its size is almost 2 meters. Then intestine 7 मीटर का होता है, तुम्हारा लेंथ 7 मीटर का है नहीं ना, तो कॉम्पैक्टली फोल्ड करके डाला हुआ है। चलो वहां पे तो बाहर निकलता दिखता तो है कम से सर, दिखता है भाई 7 मीटर ऐसा भी फोल्ड किया दिखता है। सर गॉड इज अ वंडरफुल क्रिएटर। 2 मीटर के थ्रेड को अगर मैंने आपके हाथ में दिया, बालों की तरह से भी ये होगा और ट्राई टू होल्ड इट, तभी भी दिखाई देगा इतना तो बनने वाला है। भगवान ने उसको इतना होल्ड करेगा दिखाई नहीं देगा। Okay? It has been folded because of, so this one's a very tiny molecule, but that folding is such a tremendous that which you can't see also. सेल के अंदर गया मतलब दिखाई देना बंद हो गया ना, सेल तो दिखाई नहीं देती, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और उसके अंदर 2 मीटर का डाला, and that's because of this. Yeah. So now left out is DNA. Full form of DNA. 9 के बच्चे को डीएनए फुल फॉर्म नहीं पता। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक acid. So it is DNA, D-ribonucleic acid. D मतलब 2, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइबो मतलब राइबोलोज शुगर it is, nucleic acid. Okay, so deoxyribonucleic acid is what DNA is all about. So अब इसमें से मैंने बिट्स निकाल दिए तो बचा क्या? DNA. So I draw this DNA levels. Again, इस पर नॉलेज आएंगे। तो दिखने में थ्रेड दिखाई दे रहा है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जूम इन करूं तो अरे ये थ्रेड नहीं है, ये थ्रेड भी 2 पार्ट से बना है। So what you see in your labs, डीएनए मॉडल देखा होगा ना लैब वगैरह में, तो वो इंटरवोवन थ्रेड्स है, जो अपने को दिखाई देता है ऐसा थ्रेड है। एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। दिस इज अ 10 चैनल। ओके, सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डीएनए? इस डीएनए में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, सो आई टेक दिस एज अ डीएनए, इट्स माय डीएनए। ओके, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू वी हैव? क्रोमोसोम्स पहले सुना है क्या है? पता है? हाँ या ना? पता है? सुना है। ओके, then whenever a cell we see under microscope, हमें ये दिखाई देता है। Always you see the chromatin fibers, but when a cell is about to divide, a cell divide होना चालू हो जाता है। So this chromatin fibers condenses मतलब क्या हो रहा है? They shorten up to form, so ये thread like structure है, it forms a rod shaped structure जो thread से ही बना हुआ है, which further forms a particular shape. So ये thread like structure, the thread is highly folded to form a structure known as chromosomes. So what are chromosomes? They are nothing but condensed form of chromatin fibers. When are chromosomes visible? When the cell is about to doing cell division. The cell जब divide हो रहा है तभी chromosome दिखाई देगा, वरना okay. So how many chromatin fibers of chromosome does a cell have? Every species has a unique number. Okay. So for us, the chromosome number is 46, that is 23 pairs. So let us take an example. I am drawing this over here, rough diagram. This is his DNA, student 1. I am drawing his DNA, student 2. I am drawing your DNA, student 3. I am drawing my DNA S4, sir 4. So there are 4 DNAs, okay, and कितने chromosomes हमारे में? 46. So this is all these chromosomes, like chromosomes का ही part है ना, ये सब के सब आपके मान ले 10 chromosome का,
So I have taken the 10th chromosome of all cells and we have analyzed that. So what I find is ये जो segment है, I hope segment math समझ में आता है. A segment of DNA, this segment of DNA is responsible for my color of eyes. There is another segment on it, same जगह पे, which is responsible for my hair pattern. So children, this segment of DNA which is deciding a character is known as genes. So genes are the heredity units. So every character of your body, आपका hair color, hair pattern, nose pattern, ear pattern, cheek pattern, dimple pattern, lip pattern, eye color, hair color, skin color, height, ये सब क्या है? एक gene है, which is present on the DNA, but is a segment of DNA. और ये हर एक स्पीशीज के लिए सेम है. मतलब अगर इसके 5th क्रोमोसोम पे देयर इज अ जीन रिस्पांसिबल फॉर नोज पैटर्न, तो तुम्हारे भी 5th क्रोमोसोम पे होगा, तुम्हारे में भी 5th होगा, मेरे में भी 5th होगा. सिर्फ उसका रिजल्ट अलग हो सकता है. इट वाज राइट टू बी लाइक बिगर वन फॉर हिम टू बी लाइक पैटर्न, इसके साथ और बड़ा, मेरे को ज्यादा बड़ा. ओके, तो हर एक का कैरेक्टर अलग होगा पर उसका पोजीशन वही होगा. And that is known as a gene. So gene is the hereditary unit. Matlab at the end, what passes the character? Gene. Where is gene present? On the DNA segment of DNA. And this is where is it? It is on the chromosomes or chromatin fibers. Koi doubt hai isme? Everybody? Sure. So what is the function of nucleus? Nucleus helps in cellular reproduction. It is the controller of the cell. It carries the heredity information. It is this which ultimately codes for the protein which decides your character. ये सब कुछ एक nucleus का. Last part and the chapter gets over. Is based upon the nucleus, we see there are two types of cells. One is known as prokaryotic and another is known as eukaryotic. So what is prokaryotic? Pro matlab primitive or first. Karyon comes from the word nucleus. So primitive nucleus. Nokia 3310 देखा है, सुना है? नहीं नहीं, बहुत पहले, सबसे पहले नोकिया नाम का कंपनी था, ये सुना? हाँ, सबसे स्टार्टिंग मोबाइल उसने लॉन्च किया था. इट वाज स्मॉल ब्लू कलर फोन जो सबसे ज्यादा बिका था. मैक्सिमम सेल अगर किसी का मोबाइल का हुआ है इस नोकिया 3310. एंड कंपनी ने बाद में उसको बंद कर दिया. सोचो, सबसे ज्यादा सेल पर बंद कर दिया. रीजन, अगर नोकिया 3310 अवेलेबल है तो बाकी कोई फोन खरीदेगा नहीं, बिकॉज इट वाज द मोस्ट स्टडीयर फोन. हर एक के काम पर. हाँ, इट वाज नॉट अ स्मार्टफोन. गिरा, फेंका, मार, टूटने का चांसेस बहुत कम था. खराब होने का चांसेस तो ना के बराबर. सो सालों साल चलता है. अगर एक चीज सालों साल चलेगी तो नया फोन दिखेगा नहीं. दैट वाज द रीजन इट वाज बीन. और फिर स्मार्टफोन में लगे ना. सिर्फ प्रिमिटिव वो सबसे पुराना, मतलब सिंपल वर्जन था. फिर उसमें अपग्रेडेशन होते होते अभी तो स्मार्टफोन था. दिस इज प्रिमिटिव. यू मतलब through nucleus or modern nucleus. So you can just compare Nokia 3310, Apple iPhone 14. जो भी होगा, I don't know, I'm not concerned about it, but that's how it goes. So now what's the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell? Prokaryotic and eukaryotic cell are based upon the nucleus. So what exactly is the difference? If I take this again diagram, ये तो मैं वापस एक बार सेल ड्रॉ करूं. ये रखो इतना वर्ड. I draw two cells. एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है. Okay, I forgot to mention, within this nucleus
there is a darkly stained structure known as nucleolus. There could be one darkly stained structure or there could be two darkly stained structures. So what are this? So what are this two or one darkly stained structure? Nucleolus is responsible for RNA synthesis, specifically rRNA, which in turn is responsible for protein synthesis. Okay, so what is RNA first? DNA deoxyribonucleic acid. Deoxy को निकालो तो क्या बचता है? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Further made up of three types. अलग टाइप के होते हैं. एक टाइप है ribosomal RNA. R stands for ribosome. So they are closely associated with ribosome synthesis, which in turn are synthesis for protein. और ribosomes बना तो protein तो आएगा ही आएगा. So that is how the function of nucleolus is. Up. We said prokaryotic and eukaryotic. Which cell is this? Nucleus cell. इसके अंदर chromatin fiber. A cell which do not have well defined nucleus, जिनमें well defined nucleus नहीं है, उनको prokaryotic. So what is well defined nucleus? Not well defined nucleus. It means it lacks nuclear membrane. तो इनमें nuclear membrane is absent. So when the nuclear membrane is absent, can I say it is nucleus? Is it restricted in the part? No, it is not restricted. It is scattered in the cytoplasm. So we say do not have a well-defined nucleus. Lacks nuclear membrane. And it also doesn't have the division of labor. In सब में there are cell organelles जो हमने पढ़े, mitochondria, Golgi bodies, ER, then plastids वगैरह. ये सबसे primitive cell है. Okay, it's like the business वाला काम. एक ही बंदा उसने नया business चालू किया है, सब कुछ वही कर रहा है. काउंटर पे भी वही बैठा है, बुक में काम भी वही कर रहा है, मालक का भी काम वही कर रहा है, फिर उनका भी काम वही कर रहा है. मतलब नौकर चपरासी कंपाउंड सब कुछ वो बंदा अकेला कर रहा है. Because अभी सेटअप किया. As he grows, पैसे आ गए, बिजनेस सेट हो गया, तो पहला एक हेल्पर रखेगा, और बड़ा तो और दो हेल्पर रखेगा. That's how exactly it goes. इसमें the cell was just formed. There was no division of labor, so there was no specialized organelles. So इनमें cell organelles were also absent. इनमें mitochondria, Golgi body सभी कुछ absent. जैसे टाइम बढ़ा, there was a complexity increases. Complexity बढ़ा, so there was a requirement for division of labor. And then came the proper cell, which has a well-defined nucleus. What do you mean by well-defined nucleus? It has a nuclear membrane within which is present the chromatin fibers, then nucleolus, and also at the various cell organelles. So all this makes it a eukaryotic cell. A prokaryotic cell में भी ribosomes थे, but these ribosomes were smaller in size. So what will be eukaryotic? They are slightly bigger in size. The nuclear material, the scattered था cytoplasm, that is referred as, इसको बोला जाता है nucleoid. So the nucleus of a prokaryotic cell is known as nucleoid. जबकि eukaryotic का अपन nucleus. It is not a proper nucleus, so इसको nucleoid बोलते हैं, nucleus नहीं है. कोई doubt है? This completes the prokaryotic and eukaryotic. तो आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. Open your textbooks. You can open your volumes. Get time and you can read that nucleus part. पीछे वाले पेज पे.
Yeah. You can do one small thing. Can you read for us so that everybody can listen? इसको भी काम करें. Nucleus is the most important part of the cell. It regulates and coordinates various life processes of the cell. It plays an important part in cell division. It contains factors, genes, which determine heredity. Yeah, it contains genes which are determining your heredity feature. ये main controlling unit. Nucleus is a small spherical mass located somewhat in the center of the cytoplasm. It has a dedicated nuclear membrane, which is filled with a relatively denser cytoplasm, nucleoplasm. In the nucleoplasm, there are certain thread-like structure called chromatin fiber. During cell division, the chromatin fiber becomes thick and ribbon-like. These fibers are then called chromosomes. Yeah, during cell division only, they are forming thick to form that structure known as chromosomes. Cell in which nuclear membrane is absent are called prokaryotic cells. Primitive karyote nucleus. They have nuclear materials called chromatin fiber, which occur freely in the central region of the cytoplasm and called nucleoids. Example bacteria cells in which double nuclear membrane is present are called eukaryotic cells. Example or organisms other than bacteria. Each nucleus also has at least one nucleus in it. Nucleolus. Nucleolus in it. Some cells may have more than one nucleolus. The number of nuclei in a cell is fixed. The nucleolus participates in protein synthesis of ribosomes. Number of chromosomes is defined in each species. Every human body cell has 32 pairs chromosomes. Chromosome 23 pairs. 23 pairs. Chromosomes. Chromosome number of some other common animals and plants are as follows. Okay, now the very important to understand. आपके बुक में लिस्ट दिया है, 10th में भी है, आपके बुक में पता नहीं शायद है नहीं. Okay, now they are given some name of the organism, chromosome number. Do we need to learn that? Answer is no. But just for a reference to understand, इसमें नाम दिया हुआ है, जितने भी नाम दिए हुए हैं, इनमें if you see, they are given you one line. इनका chromosome number 38 दिया है. Then they are given you is chimpanzee and donkey. Sorry, monkey and dog. Chromosome number is 48 for it is chimpanzee and sorry, potato and chimpanzee is 48. Then अब उस लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे, but there are two interpretations which you can find from that. A, all the chromosome numbers are even number, multiples of 2 or divisible by 2. Why? Because वो एक पैर फादर से आता है, एक पैर मदर से आता है. So 1 + 1 2. तो हमेशा पैर होगा. एक चीज. दूसरा, क्रोमोसोम नंबर cannot decide your characteristics. अगर ऐसे होता तो those chromosomes which number are same, those अगर उनका number same होता, are they same? Like potato and chimpanzee for that one. एक तो plant है, एक animal है, दोनों में किसी भी relation में नहीं. दूसरा पर 46 46 46 46 हम सबका chromosome number same है because हम एक ही species को belong करते हैं. But are we jealous of each other? No. So chromosome number doesn't determine the characteristics. It is the gene present on the chromosome. कौन सी जीन प्रेजेंट है, उसका कैरेक्टर क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उसका कैरेक्टर क्या होगा या क्या नहीं है. समझ में आया? Let's read this part. The chromosome carry the genetic characters from the parent to the offspring through the union of the egg of female and the sperm of the male. Chromosomes are made of chromatin, which is composed of hereditary units called genes. Genes are made up of complex chemical substances, DNA.
deoxyribonucleic acid. It is the genes, not the number of chromosomes, that determine the character of the species. Lion, tiger, and house cat all have 38 chromosomes, but they look different due to different genes located on their chromosomes. You can revise your understanding about the various parts by going through the table, which is summarized the various parts. That completes the chapter. उसके आगे का पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया पहले ही प्रोटोप्लाज्म के डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट आप खुद पढ़ोगे उसके बाद नीचे लेगुमिनी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये खुद पढ़ोगे और ये स्टूडेंट में पढ़ाते हैं ओके दैट इज नॉट नो इम्पोर्टेंट आपके बुक में है ही नहीं चलिए वो सिर्फ शाम करेंगे सो बाय दैट ऑफिशियली वी हैव कंप्लीटेड द सेल चैप्टर आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रिलैक्स आराम से शांति से बैठना सोचना ओके उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्कूल में क्या चालू किया अभी नेक्स्ट में स्टार्ट कर दिया कितना हुआ अच्छा हमको फ्लो करते लास्ट ईयर हम रैंक के पीछे कोई पुष्कर लगा दिया है तो पीछे जानवर लग गया पता है तो सबसे लास्ट कंप्लीट करने वाला स्कूल रहा है सबसे जल्दी खत्म करने वाला पोलदार वाला नॉर्थ पॉइंट था अभी नॉर्थ पॉइंट और पोलदार को भी रहने पीछे गई एवीएन का तो पता नहीं था स्कूल में सेल तो हो गया क्या चालू है टिश्यू हो गया और सेल कर रहे हैं इट्स लाइक पहला नाम सिखा दिया फिर रिएक्शन सिखाया हम पॉइंट है रिजल्ट है किसी से मतलब कर वो टीचर आयो हिंदू में लगी है कितना सिनेटी कर सेल पहला नहीं ठीक है तुम्हारा टिश्यू हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया तुम्हारा टेस्ट चालू है एग्जाम स्कूल की छुट्टी गिर गया कब चालू हो रहा है फर्स्ट जून एवरीबॉडी each standard say 70 each standard का 70 से चालू है हमारा फर्स्ट ये 8 में का 9 not quite starting to enjoy. ठीक है एक काम करते हैं we have almost 15 plus 25 minutes इश्यूज करके स्टार्ट करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं बस आधे पे आगे टाइम तो व्हाट वी डू इज इसके बाद अपने वैकेशन में तो अपन फटाफट जाएगा so today we start with a very small chapter and a much faster we go on ppt only because chapter बहुत छोटा है is the next chapter flower और एग्जाम में आपके फर्स्ट 6-7 चैप्टर्स तो आएंगे हैं रैंक का तो कंपल्सरी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तक तो होगा ही ये हर साल आएगा तुम्हारा भी सेम हाल होगा एक मार्क पॉइंट का थोड़ा पहले 3 साल और लास्ट के 1-2 दिन उठा कर डालेंगे सर इसमें सर हाइजीन सेल्फ स्टडी है पोल्यूशन सर कितने चैप्टर्स हैं हाँ मुझे ऐसा पता है फर्स्ट यूनिट क्लासिफिकेशन किंगडम क्लासिफिकेशन में गुड है वेरी गुड ठीक है अपना यहाँ तक हो जाएगा वैकेशन में तो आई थिंक अपन यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे डोंट वरी सिलेबस खत्म करने का इशू नहीं है शैल वी प्रोसीड है ना उसका थोड़ा कुछ साइड शिफ्टिंग है दिखाई दे रहा क्या आपको ठीक है तुम्हें अभी चालू क्यों नहीं हो रहा है
अरे यार चालू होगा अभी मैं तो जल्दी चालू ठीक है ओके we start with the next chapter that is flower सबसे पहला how do you define the term flower पहला बुक फिलहाल बंद कर देना मेरा कुछ सामने नहीं है बाद में बताऊंगा आपको काम and see now everybody okay so चल सबसे पहले यहाँ पे what exactly is a flower आपके हिसाब से flower क्या होता है अरे कुछ तो आइडिया होगा वो पार्ट्स हुए what exactly how do you define a flower can I say it is a reproductive part of a plant I am flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structures so if I take my hand as a plant okay तो अपन plant draw करते हैं बोर्ड के ऊपर कलर ड्रॉ करके सब plants दिखाते हैं so that plants are shoots okay shoot के ऊपर क्या आता है shoot के ऊपर stem shoot spread out हो गया stem आ गया stem के बाद क्या है leaves so it will form a leaves but यहाँ पे क्या it's a modified shoot तो वो shoot wherein instead of having leaves on it what is it forming the flower so here in which the leaves are modified so it's a specialized shoot in which leaf के बदले there is a modification to form the floral structures so leaf की जगह पे there are parts of floral structures is known as flower तो सबसे पहली चीज जो मैंने एक्सपेक्ट की था आपका आंसर नहीं है flower is never said as the reproductive part of the plant अब जैसे सर फ्लावर तो फ्रूट बनाता है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए काम आता है तो ऐसा क्यों सर okay so as we proceed in the chapter we will come to know why flower is not said as a reproductive part of a plant clear with this so now it is a specialized shoot in which the leaves are modified to form floral structures floral structures मतलब the floral parts so now सबसे पहले फ्लावर तो किसी को दिया होगा ना फ्लावर किसी को दिया होगा ना बड़े प्यार से टीचर मम्मी डैडी है ना और भी बहुत सारे हो सकते हैं रीजन so when you take the flower in your hand this हाथ से पकड़ के उसको stalk that is what we say as stalk और उसको बोलते हैं pedicel or pedicellate so what is pedicel or pedicellate flower here you can see this part okay then ये flower है ये उसका stalk हुआ अब कुछ flowers में there is no pedicel directly without stalk so then that is known as non pedicellate flower or what we say as sessile flower am I clear so we have pedicellate or sessile what is the function of stalk it gives support to a plant अब एक एक करके समझते हैं sessile then सब कुछ आपको एग्जाम में नहीं है जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर योर रेफरेंस बिकॉज़ बुक में डायग्राम कुछ नहीं दिया होगा सिर्फ आपके इसके लिए दे रहा हूं sessile without stalk or petal stalk को petal भी कहते हैं लीफ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस चाहे वो लीफ हो चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो चाहे वो फ्लावर हो पेडंकल और पेडिसल अटैच डायरेक्टली टू द स्टेम जब स्टॉक या पेडंकल या पेडिसल तीनों एक ही टर्म डायरेक्टली अटैच करता है उसको बोलते हैं sessile flower so it is not a term only restricted to the flower चाहे वो लीफ हो चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस what is inflorescence a bunch of flower is known as inflorescence तो bunch of flower भी कभी-कभी स्टॉक से अटैच उसमें डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको बोलते हैं sessile
You can see chaff flower and saffron. तो ये है साफा. You can see some small flowers. और ये main axis है बीच में. So directly attached है. It's not क्या बीच में से stalk है उसके बाद flower. So इसको बोलते हैं अपन sessile flower. Am I clear? Next. Stalk pedicellate. Which has a stalk or which has a pedicellate, and that is known as pedicellate flower. Example. if इसके नीचे stalk होता है, you can see this part. ये stalk है उसका. यहाँ से लेके यहाँ. That is what we say hibiscus. Up on top of the stalk there is a structure known as receptacle or thalamus. So अगर मान लो मेरा ये stalk है, white part is stalk. तो इसके ऊपर there is a disc-like structure. तो इस part में ये थोड़ा डिस्क है या कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका फ्लोरल स्ट्रक्चर्स रेस्ट करते हैं या प्रेजेंट होंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल मतलब क्या? रिसीव करना. सो वो फ्लोरल अपेंडिज जिसको अपने ऊपर रिसीव कर. सो इट्स अ कप शेप और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन व्हिच आर प्रेजेंट योर फ्लोरल स्ट्रक्चर. सो यू कैन सी the tip of flower stalk may be expanded to form a cup shaped structure which is known as thalamus or receptacle. तो इस डायग्राम में ये है receptacle और now stalk हो गया, thalamus हो गया, उसके ऊपर क्या है? Floral structures. So what are floral structures known as? Bowls of a flower. Why it is not known as parts of a flower? The parts of this. The parts नहीं बोला, bowls बोला. बोल का मतलब होता है पार्ट्स विच आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड. तो एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल. ऐसे कितने सर्कल है? 4. सो दैट इज हाउ द होल्स आर रिप्रेजेंटेड. तो सबसे पहला वहां पे बाहर से अंदर. सबसे बाहर जो है वो है सेपल्स. इस डायग्राम में ये ग्रीन कलर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेपल्स. That is also known as properly calyx. आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? टेक्निकल टर्म calyx, sepals नहीं. Then उसके अंदर there are colorful structures known as petals. Which are known as corolla. उसके अंदर there is a male reproductive part known as stamens, also known as androecium, which is commonly referred as male reproductive parts. उसके अंदर सबसे सेंटर में जो होता है ये रहा is the female reproductive part known as pistil, also known as carpel, also known as gynoecium. So 4 parts. कोई डाउट है 4 parts में? अब इन 4 पार्ट के पहले बेसिक फंक्शन समझिए. What is the function of the calyx? Protection of the bird. Protection of the flower in bird stage. और good. एक bird stage में protect करता है, so it protects the flower in the bird stage. Second, what is the color of it? Green. So it performs photosynthesis to provide food. That's the 2 functions of the sepals or calyx. उसके अंदर है petals. उसके भी function है. Attraction of insects. Attraction of insect. एक और एक function. It protects the inner walls of the flower. जैसे सेपल बर्ड को स्टेज पे प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे सेपल्स पेटल्स फ्लावर के जो इनर स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है. सो इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लावर एंड इज helping to attract insects for pollination. Beautifully colored to attract insects for pollination. 2 functions. तो पहले वाले के 2, दूसरे वाले के 2. तीसरा stamens. What are stamens? So what is the function? It produces male gametes. What are the male gametes? Pollen grains. तो ये काम कर रहा है stamens. Next function is next part is pistil, also known as gynoecium. So what is gynoecium? Female reproductive part. So what is its function? The female gamete, which is the ovule. So it also helps in reproduction. The 4 parts. Wait out here. Go ahead. Now, based upon these 4 parts, अलग अलग चीजें बोली जाती हैं. अगर चारों पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, ऑल्सो नोन एज परफेक्ट. सब कुछ ढंग से कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर कर रहा है, परफेक्ट है आपने. ढंग से नहीं कर रहा तो इम्परफेक्ट.
something like that. If all the four holes are present, we say them as complete flower or perfect flower. If any of the hole is missing, then we say it as incomplete flower or imperfect flower. So this is based upon presence and absence of. अब उस holes में उनके function के हिसाब से they are referred as essential parts and non-essential. Which is the most essential part for the flower? The reproductive part. So this reproductive parts are known as reproductive parts or essential part. मतलब ये होने चाहिए तब जाके flower reproduce करेगा. What is non-essential part? Accessory part. What are accessory? ना घड़ी ये अगर ये पहनने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पहनने से फर्क पड़ने वाला है सर ये पहनने से दिमाग चलता है ऐसा कुछ है ऐसा कुछ होता है तो कितना लड़के तो कितने एक्सरसाइज करेंगे okay so then non-essential or what we say as accessory parts clear अब ये कुछ terms है so we skip this part for right now okay पहले समझ में लेते हैं इसी के ऊपर essential कौन से पार्ट है so there are two parts कौन से दो पार्ट androecium and gynoecium which are non-essential parts sepals and petals calyx and corolla okay अब जब बात के तरफ हम बाद में समझ लेते हैं तो अपन थोड़ा डायरेक्ट दो तीन साइड आगे स्किप किए पहला ऑर्गन समझ लेते हैं okay now we try to understand sexuality of a flower. I hope sexuality of a flower is something. So before I go to the next part, a simple basic general knowledge question. Okay, to see your general knowledge is, और आपको सिर्फ हाथ ऊंचा करना है. You will not prompt the answer. Okay. So my question is very simple. When I say sexuality in flower, we normally say the flower is unisexual or the flower is bisexual. हम क्या है ये हाथ ऊंचा करना पता है मैडम बोलो sure Yes. confirm Yes. लॉक किया है गुड एक ब्रांच में सर के बाइसेक्सुअल then those organisms which has either of the reproductive part एक तो मेल होगा या एक तो फीमेल होगा उनको क्या बोलते हैं यूनी मतलब सिंगल तो इनमें कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट है either male reproductive part या फीमेल reproductive मैडम सो व्हाट आर वी इसके बाद किसी ने पूछा तो बोल पाओगे I am unisexual. Okay, boys unisexual पता था. Question mark could always be. Okay, now comes what is bisexual then? Which has both androecium and gynoecium, or which has both the reproductive parts, is known as bisexual. Normally plants में अपन bisexual word use करते हैं वहाँ पे लिखा भी है तो उन्होंने वो अलग word भी दिया है hermaphrodite. Hermaphrodite बताओ it is another term for bisexual. So अपन पहला एक example bisexual example अगर मैं बोलूं can you see this part ये कौन सा part है ये gynoecium है ये पार्ट कौन सा है ये एंड्रोशियम है फीमेल पार्ट मेल पार्ट दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर इट इज बाइसेक्सुअल ओके अब देयर आर सर्टेन फ्लावर्स लाइक पपाया सुना है देखा भी होगा सो पपाया है वैनिला है कुकुम्बर है वाटरमेलन है दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब क्या सिर्फ कोई एक पार्ट होता है सो इट मे हैपन ये दोनों के पास जमीन है गार्डन है ठीक दोनों के पास पपाया ट्री है दोनों रेगुलर इसको वाटर करते हैं फर्टिलाइजर अपने बच्चे की तरह जानते हैं
बड़ा हो गया प्लांट, फ्लावर भी आ गया, उसके पपाया मतलब उसके प्लांट को पपाया आ रहा है, फिर पानी डाला सब कुछ कर, पपाया ही नहीं आ रहा है, फ्लावर ही आ रहा है, क्यों? इसमें मेरे प्लांट में यूनिसेक्स मतलब एंथ्रेसाइड ये सिर्फ मेल फ्लावर है, जबकि इसका फीमेल फ्लावर था, तो फ्रूट किस में बनने वाला है? फीमेल में। तो इसके प्लांट पे पपाया आ गया, ये बोल रहा है यार सब कुछ किया अब तक नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? कैन वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? नो, तो वहां पे वो पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी से यूनिसेक्सुअल। इतना समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। वो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में मैंने कुछ बोला था, हाउ वी डिफाइन अ फ्लावर। आज 10 मिनट ही हो गए। It is a modified specialized tool in which the leaves are modified to form floral structures. What we do not say to a flower, then unisexual सुना, bisexual सुना। अब अपन थर्ड वर्ड सुने, न्यूट्रल, NEUTER, न्यूट्रल नहीं, न्यूटर, TER, ओके? तो ये पहली बार सुन रहे हो, a flower which neither has a male part nor a female, इनमें ना मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है, and such flower is known as न्यूट्रल। ऐसा लोग सरप्राइज क्यों है? Some doubt you have? So my question is, तो मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं है, तो है क्यों? Sure. For sure. Good. Then almost right है, the large number, but they add on to the number of flowers. Not exactly sure, but उसका एक और reason है. Normally these flowers which are neuter, they are small, inconspicuous. तो अगर मान लो कि मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करना, ठीक, और इस फ्लावर का एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इसके फ्लावर ड्रॉ करो टिप के ऊपर, कैन यू सी दैट फ्लावर? दिखाई दे रहा है? नहीं ना, डॉट ड्रॉ कर सर, दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं इस फ्लावर को ड्रॉ करूं with a bunch of flowers, now can you see? Okay, चलिए एक अकेला दिखाई नहीं दे रहा, तो वह छोटा इनकॉन्स्पिक्यूअस था, but the moment there are more number added to it, वो बड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है, so they will be able to attract. उनमें से all will not be neutral, some of them will be neutral, इनका काम सिर्फ नंबर बढ़ाना है, but इनमें there will be some which would be the normal flower forms. समझ में आया? अब बुक का एग्जांपल अगर देखते हो तो they have given you the book example as sunflowers. Can you see the sunflower? Okay, then sunflower is an aggregation of flowers. Indian flower नहीं है, पता नहीं होगा, अभी पता चल गया है। It's aggregation of flowers. You can see this part, middle part, ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये डिस्क बनाता है तो इसको डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, मतलब फ्लावर्स ही है, नॉट कंप्लीटली अनपेटल एक्सेट्रा। तो ये डिस्क फ्लोरेट है, पर इनमें मेल फीमेल पार्ट है, करोला पार्ट भी है, सब कुछ है, पर बहुत छोटे छोटे डेवलप पार्ट है। इसलिए ये फ्लावर है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट। पर साइड में जो पेटल्स दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट, बिकॉज इनमें there are petals which are formed bigger in size, but there are no male and female part. So can they reproduce? No. So वो सिर्फ नंबर बढ़ा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए. Then that is what I mean by a neuter. Okay. अब sunflower एक example है जिनमें there are both the flowers. But then there is a plant, there is a certain plant
जिनमें एक ही प्लांट पे सभी ग्रो होते हैं, सभी, मतलब उसी प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है, उसी प्लांट पे बायसेक्सुअल फ्लावर भी है, और उसी प्लांट पे न्यूटर भी ग्रो होता है। एग्जाम्पल इज मैंगो, कैश्यू नट, जैकफ्रूट, these are some of the trees जिनमें एक ही ट्री पे सब ग्रो होता है। मैंगो का फ्लावर देखा है? Where do you have a native place? Here, Solar. सोलापुर, महाराष्ट्र में। केरला में आम थोड़े बहुत तो दिखाई देंगे, पर कुछ न तो स्कूल के बाजू में ही होगा। द मैंगो फ्लावर से अपने हिंदी में मोहर, मराठी मोहर, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्फ्लोरेसेंस, लाइक इसके छोटे छोटे येलो कलर के से फ्लावर्स बंच में ग्रो होते हैं। जब फ्लावरिंग सीजन होता है इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, पूरा पेड़ इस फ्लावर से भर जाता है। अभी ऑफ लेट 3-4 साल से बदनसीबी के बारिश गिर रही है, बार बार सब गिर जाता है, और अगर प्रॉपरली हुआ तो पूरा पेड़ भर जाता है। तो उतना मैंगोज आते हैं क्या? नहीं, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ फ्लावर जिनमें कुछ न्यूटर होंगे, जिनमें कुछ बाइसेक्सुअल होंगे, जिनमें यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? आइदर इट विल हैव स्टेमन और इट विल हैव पिस्टिल। जिनमें स्टेमन होते हैं उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, जिनमें पिस्टिल होते हैं उनको बोलते हैं पिस्टिलेट। तो 1, 2, 3, 4 टाइप के फ्लावर ग्रुप होंगे, इनमें से मैंगो बुल्स में आएगा। Which flower will turn into mango? Pistillate and bisexual. बाकी asexual का कोई फ्लावर नहीं बनने वाला है, staminate का और neuter का। तो सर that how the neuter is always. इसीलिए now can I say all flowers are reproductive part? नहीं ना, इसीलिए flower cannot be defined as a reproductive structure because कुछ तो neuter है, इनमें ना male है ना female। Any doubts? Sure. Lecture ends at 5:15 ना? Time हो गया। Okay. So we'll stop over here. Reason is, so next time I'll see that I'll bring some flowers for you, ताकि आपको और जल्दी समझ। Maybe और आधा घंटा and we complete this chapter. पता है नहीं पता। And then we start with tissues. Vacation में अपना tissues 3 घंटे में तो maximum हो जाता है। And I hope continue reading. Okay? हाँ मैडम, मेरा बाय डिफॉल्ट होमवर्क होता है कि जो जितना मैंने पढ़ा है वो आप पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में आते। अब तक मैंने कितना ज्यादा पूछा नहीं। वैकेशन में आपके पास टाइम ही टाइम, बस तब मैं आपको रुकाऊंगा, फिर आराम से घर पे भेजना। Parents will be happy to make you sit over here as a finisher. So बेटा के वापस 6 घंटा और बेटा हमारा सर कम हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले फ्रेंड होंगे ना, तो पर मैं रुकाऊंगा, पर ढंग से पढ़ के आना है। फर्स्ट चैप्टर पूरा इन एंड आउट सेल, इसको मत पढ़ना, तो सेल को पढ़ के आना। Yes.
Right.